अकबरुद्दीन ओवैसी गाరు ఇంతకు ముందే నాకు ఛాంబర్ లో కూడా వచ్చారు. एक सीबीसीआईडी का इंक्वायरी आप मांग रहे थे, हम जरूर आज ही आदेश दे देंगे कि वक्फ बोर्ड के जमीनात को भरपूर महफूज रखने के लिए जो उसके साथ नाइंसाफी हुआ है उसको खोज के निकालने के लिए सीबीसीआईडी का इंक्वायरी आज ही डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं. मोहतरम स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे मुतालबे पर सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का ऐलान किया मौकूफा जायदाद पर जमीन पर. कि हैदराबाद में पुराने ही अस्पताल है, नया कोई नहीं बना. उस्मानिया अस्पताल, गांधी अस्पताल, नीलोफर अस्पताल उसी निजाम जमाने का बनाया हुआ आर्थोपेडिक हॉस्पिटल, निजाम आर्थोपेडिक हॉस्पिटल निम्स. सरकार ये फैसला लिया है कि 4 नए दवाखाने कम से कम 6,000 या 8,000 बेड से, इसके लिए एक हॉस्पिटल ऑलरेडी आ चुका है जो एशियाड गेम्स के टाइम में बनाए गए थे. टिम्स के नाम पे तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसी के तहत 4 दवाखाने बनेंगे. मैं चीफ मिनिस्टर साहब के तवज्जो इस बात पर भी जरूर लाऊंगा कि हमारी पार्टी की जानिब से आपने जो ऐलान किया शहर के 4 तरफ में नए बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम के लिए, हम इसका भी खैर मुक़द्दम करते हैं और हमारी पार्टी की जानिब से मुकम्मल ताउन करेंगे. और ये भी कहूँगा कि हमने उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक से कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो मीटिंग ले रहे हैं और इस मीटिंग में उस ताल्लुक से भी ज़रूर बातचीत करेंगे. बना सकते, मैं आपसे बात करता हूँ, आपको मैं बुलाने वाला हूँ. कल भी आप काफ़ी चर्चा किए हैं पुराने शहर के बारे में, उसको भी क्या करना चाहिए बिल्कुल सोचेंगे हम लोग और एक फैसला ले लेंगे. मगर मैं फिर से मुतालबा करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल को भी ले लीजिए. उसमें तामीर के लिए हमारे पार्टी का एक स्टैंड है जो आम हो चुका है और हमने वो उस ताल्लुक से भी पुराने शहर के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी. जो बाटा सिंगारम में मार्केट बनाया जा रहा है वहां भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और जैसा हमारा शहर बढ़ता है हमारा फ्रूट बाजार भी बढ़ता है, इसीलिए वहां से इसको शिफ्ट करके हम बाटा सिंगारम में बना रहे हैं. मैं आपसे गुजारिश करता हूं, किसी फ्रूट वेंडर के साथ या स्मॉल वेंडर के साथ नाइंसाफी हो ये सरकार का मंशा नहीं है, लेकिन एक अच्छी दवाखाना वहां बने ये सरकार का मंशा है. बिना किसी तकलीफ के किसी व्यापारी को बाटा सिंगारम हम उनको भेजेंगे, वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सरकार ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपकी तरफ से अगर आप इजाजत देते हैं, 2 जमीनें हैं वफ की. एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 16 एकड़ जमीन है मामिटपल्ली में, वो फ्रूट मार्केट को वहां पे मुंतकिल किया जाता है. तो वो फ्रूट वेंडर्स वक्फ बोर्ड के किराएदार बनने के लिए भी राजी हैं. अगर आप इसके लिए मंजूरी देते हैं तो मैं समझता हूं कि 16 एकड़ वक्फ की जमीन का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, वक्फ बोर्ड को भी उसका किराया अच्छा आएगा और फ्रूट वेंडर्स का भी मसला हल हो जाएगा. और मैं यहां खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि हम उन फ्रूट वेंडर्स को वहां से खाली कराकर दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है ताकि वहां पे एक अच्छा सा अच्छा हॉस्पिटल बने, बशर्ते ये कि उनका यह मसला हल हो जाए. एयरपोर्ट के पास और दूसरे जगह जो काफ़ी जायदाद है 16-17 एकड़ का, हम वहां भी फ्रूट मार्केट बसाया जा सकता है. मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है. अगर ये लोग वहां जाने के लिए तैयार है बिल्कुल वहां इंतजाम कर देते हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं. और काफ़ी जायदाद है, अगर वक्फ बोर्ड सहमत है तो उनको किराए का भी कुछ मुकर्रर करते हैं, उस हिसाब से एक प्लान बनाइए, एक मनसूबा बनाइए. बिल्कुल हम उससे सहमत है. महमूद अली साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और निरंजन रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो दोनों मिले और आप भी मिले, बातचीत करें, कुछ उसका एक नतीजा निकाले तो बिल्कुल सरकार उसके लिए तैयार है. मैं ये भी जानना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लिया गया था, अमृत प्रोग्राम भी 12 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज में लिया गया था, तो इसका स्टेटस क्या है? और मैं ये भी जानना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड्स सैंक्शन हुए हैं अंडर दी स्कीम्स और नॉट? अब अमृत सिटी का भी मैंने बता दिया, स्मार्ट सिटी का भी मैंने बता दिया, काम जारी है. उसमें केंद्र सरकार भी कुछ पैसे आया है, राज्य सरकार ने भी कुछ पैसे जोड़ा है. दोनों के तहत अब तक 1753 करोड़ खर्च हुए हैं. आगे भी जैसा जैसा काम होना है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाएगा. And sir, I would also like to request once again reiterate the demand of my party for comprehensive scheme for regularization of encroached lands on lines of GO 58
N59, revival of building regularization scheme, reopening the layout regularization scheme once again, providing one-time opportunity to the unassessed property owners to get their properties assessed for property tax, and one-time opportunity to the owners of property under notarized transactions to get their properties registered on the lines of Saida Bainama for the agricultural land transactions. Sir, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم اٹھائے تھے. امید کرتے ہیں حکومت کی جانب سے اس پہ ہمدردانہ غور کیا جائے گا. اور یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ آن اکاؤنٹ آف دا امپلیمنٹیشن آف نیو ریونیو ایکٹ اینڈ میونسپل اینڈ پنچایت راج امینڈمنٹ ایکٹ اینڈ دا TSB pass building permission act, thousands of people are facing difficulty for registration of property transaction under Dharani portal for obtaining building permissions under B-Pass. یہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ کے مسئلے کو اگر آپ حل کرتے ہیں اور بلڈنگ ریگولرائزیشن میں جانتا ہوں کہ کورٹ میں ہے, ایک اگر اس کو پرسیو کریں گے تو ہم کو ریونیو بھی آئے گی اور کافی غریبوں کا اس میں فائدہ ہوگا. جو جیو 58 کا آپ نے ذکر کیا, ہمارا ہمدردی ہے غریبوں کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کا ایک ایمبارگو بھی ہونا چاہیے. اسٹاپ اٹ دیر فار ون ٹائم. مکمل طور پر آپ چرچا کریں, اس کا ڈسکشن کریں اور اس کو ایک مکمل اسکیم بنائیں. دونوں چیز, میں آپ کا دونوں چیز کا جواب دے رہا ہوں. جو نوٹرائزیشن ہے وہ کب اینڈ ہو جائے گا اس کا, ہم نے کہا ہے بھائی کرو, اس میں کیا اڑچن ہے. تو ایک ہی بار کچھ ایک طریقہ اس کا اپنائیے. ان چیزوں پہ غور کرنے کے لیے ہم نے ایک کیبنٹ سب کمیٹی بھی اپوائنٹ کیا ہے, جس کا صدارت آپ کے بلدیہ کے منسٹر صاحب ہی کر رہے ہیں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, شہر حیدرآباد کے پورے MLAs کو آپ بلائیے اور یہاں کے کلکٹر کو, چیف سیکرٹری کو, صوبی کو بلائیے کیبنٹ سب کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے اس پہ ایک نتیجے پہ اگر پہنچ گئے جلد سے جلد, ہم اس مسائل کو حل کر سکتے ہیں. کہ ہم نے کہا کہ چارمینار پیڈسٹرائزیشن کے لیے بریجز بنائیں گے سالار جنگ میوزیم کے پاس. تو سالار جنگ میوزیم کے پاس میں صاحب گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن آف اولڈ سٹی املی بن پہ بنایا گیا ہے, جس کے لیے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو اسٹیشن ہے املی بن کے پاس گاربیج ٹرانسفر کا, اس کو وہاں سے شفٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اگر ہم پھر ہاکرز کو وہاں لاتے ہیں تو پھر وہ گندی بو کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف ہوگی. اور میں اس کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ ریجنل رنگ روڈ کا کب آغاز ہوگا اور اس کے اوپر کب سے کام ہوگا. اور میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ڈیورنگ دا فائنینشیل ایئر 2021 the government has announced 50% waiver of annual property tax on residential properties due to COVID-19 floods. About 13.73 lakh property owners in GHMC benefited and the GHMC lost rupees 204 crores due to this waiver, sir. Sir, however, the government has not compensated the GHMC for the 50% tax waiver last year. On the other hand, the government has announced budgetary allocation of rupees 250 crores to Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage for the 20,000 liter free water scheme, sir. So through you, Honorable Speaker, sir, I request the Honorable Chief Minister صاحب کہ جس لائنز پہ آپ نے واٹر سیوریج کے لیے 250 کروڑ روپے دیے تھے, ویسے ہی GHMC کے 50% جو ٹیکس ویو کرے ہیں وہ بھی اماؤنٹ اگر GHMC کو دیتے ہیں تو بہت مدد ہوگی. اور آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اور چیف منسٹر صاحب نے اور منسٹر صاحب نے جو مکمل جواب دیا ہے ریاست کے ترقی کے بارے میں اور بلدیات کے بارے میں اور مکمل جو کام ہو رہا ہے, اس کے لیے میں مبارکبادی دیتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ ہم اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے اور بنگارو تلنگانہ کا ہمارا خواب ضرور حقیقت میں تبدیل ہوگا اور ہمارا اسٹیٹ جو آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے, انشاءاللہ تعالی ضرور نمبر 1 اسٹیٹ ہمارے پورے ملک میں ہوگا. اس کے لیے ہماری پارٹی کا مکمل تعاون آپ کے ساتھ رہا ہے اور آگے بھی ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. I thank Mr. Akbaruddin Owaisi for the praise of what